Yesterday, we were actually discussing pure substances. It's very easy to define pure substance as a substance which consists of only one substance, the substance under consideration. There is nothing else in it. And if there is something else, we call it an impurity. If there is nothing, we say that it does not contain any impurity. Hence, the definition pure substance. Okay. A pure substance melts and boils at definite temperature. And that for water, we stated yesterday that for water, melting point for 0 degrees centigrade, boiling point for pure water is 100 degrees centigrade. So for a pure substance, melting and boiling points are precise, predictable. Not just that, we can use them to test the purity of a sample, uh, which means if the values are what we are saying, exactly what we are saying, it means it's a pure substance. But if the value changes a little bit, or differs a little bit from the stated value, for example, if the melting point of water is not 0, it's 0.1 degree centigrade, then the water might not be pure, right? If the water is not boiling at 100 degrees centigrade, it's boiling at 99.9 or it's boiling at 100.2, the water is probably not pure. So that's how we can say that we can use melting point or boiling point to test the purity of a sample. And melting point or boiling point can easily be checked. We, as our yesterday's part of syllabus, compared both types, means electrically heated melting point apparatus, or which we also call digital apparatus, which are new ones, which are the better ones, more accurate, more precise. And we can go with the uh, old-fashioned method in which we can do it with some manual working, right? This is the electrical melting point apparatus in which we simply put in the substance and check the temperature. It can be digital where an LCD or an LED screen can tell us the temperature. Even we don't have to calibrate it on a thermometer. Otherwise, we can do it manually by taking a beaker or water bath or an oil bath. We can take in the solid, and as soon as it converts into a liquid, which is done by a naked eye observation, we can find out the melting point. However, this method requires some tediousness. This method requires some keen observation. If you're not observing, if you're busy in chit chat with friends, you might lose the time, you might lose the point where it melts, and you might get to a wrong observation or to a wrong melting point. So, this is some tedious work, a patient work. Uh, you can say it's a sort of hard work. So this one's easy, in which the melting point is taken and recorded automatically for us. Hence, the digital apparatuses are considered better, accurate, more precise, and the values also given in decimal points. Hence, that's better because in case of thermometers, the average thermometers, the thermometer we are discussing over here, do not give us that precise of a value, that accurate of a value. Okay. Um, I'm using two words over here. One is accurate, second is precise. So I wanted to ask you, do you understand the difference between accurate and precise? Okay, that's actually a part of physics, not chemistry. Have you done the meanings of accurate and precise? Anyone? Okay, let's do it like this. Let me annotate that on your screen, and I want you to note it down on your books so that it's easier for you. So here I'm writing, or I'm defining accuracy and precision. So I've written accuracy means how close your result is to the actual value, and precise means that how close your
two experimental values are to one another. See, that is accuracy and precision. You might want to write that down on your book. Go ahead, note it down, and when you're done noting, let me know. And meanwhile, let me also explain. Accuracy means how close your result is to the actual value. आप water का boiling point find out कर रहे हैं और हम जानते हैं उसकी actual value pure water के लिए 100 degree centigrade है. आपने experiment किया है, आपकी value 100 से कितनी close है, ये accuracy है. आपकी value 99 आई है, it's not close to 100, 99.2, it's a little bit closer. किसी और student ने किया है वो 99.5 पे आया, more closer. किसी और student ने किया वो 99.8 पर आया, better, much better. किसी student ने किया उसकी value actually 100 आ गई है, ठीक है, that's even the most accurate one, ठीक. So the actual value is 100 and your result is whatever you have taken. So the closer your result is to the actual value, the more accurate you are. And precision is actually how close two experimental values, your two experimental values, are to one another. In lab, we do not experiment one thing only once. What we do is that we try to do it more than one time. We try to do it 3 times, we try to do it 2 times, 4 times, so that we can take an average or we can get closer to the actual value. Because in lab, even making smallest of mistake can take your value far from the accurate value. So let's consider the same example. You are going to boil water. The first time you did your experiment, जी बेटा पूछें. पूछे बेटा, I'm waiting. सर आपकी आवाज सही तरीके से मुझे सुनाई नहीं दे रही. सॉरी, क्या कह रहे हैं? मेरी आवाज सुनाई नहीं दे रही, ये कह रहे हैं? Sir, I think he's having net issues. अब बाकी स्टूडेंट्स को क्लियर हो रहा है? Yes, sir. Yes, sir. यस सर. ठीक है बेटा, आपके पास नेट इशू आ रहा है, नेट कनेक्शन या तो चेंज कर लें या इसे रीस्टार्ट कर लें, कोई मसला नहीं है. ब्रेन ठीक. Okay, we'll carry on. Precision is actually when you did the experiment more than once. ठीक. Let's say you were doing the same experiment, finding the boiling point of water, and for the first experiment your value was 99, for the second experiment your value is 98, and for the third experiment your value is 90. ठीक. It means that the first two values can be considered as precise values because they are close to one another. 19 and 99 are quite close to one another. And during the third experiment, you were not either not doing it right or you were not observing it keenly enough. That's why your value is 90, which is far away from 98 and 99. So that is not a precise value. So doing the experiment 3 times will also get you to know another factor, which is precision. And the precision is a factor in which we consider all values, all experimental values to one another, how close they are to one another. It means if one value is too far away from the other two, that means only 2 values are precise and 1 is not precise, which means the third experiment in this case, the value for 90 degrees centigrade is not precise. Well, for 98 and 99, they are quite precise. Right? So being closer to the actual value gives you accuracy. And if the experimental values are close to one another in more than one time experiment, then it's precision. I hope the difference is clear, but if you still have a question, go ahead and ask. Okay, are we done noting it down? Yes, Girls, sir. boys? Yes. Good, good. So I'm going to erase it now. Okay, moving on. So we were saying that we can find it out.
this is all what we have done yesterday, and I'm going to get back to our today's work. Now, for our today's work, we are supposed to go with this table at the bottom of page number 24. And a substance's melting and boiling point in relation to room temperature. Room temperature can be taken as 20 or can be taken as 25 degrees centigrade. Now, let me clear that a little bit. You might have a question that why do we have two different room temperatures? Okay, all the countries in the world which are considered as cold countries, in which for most time of the year the weather is cold, their room temperature is considered to be 20. However, the countries which are closer to equator, the countries that are considered hot countries, okay, the countries for which most time of the year the temperature is hotter than the other, those are considered as 25 degrees centigrade room temperature. Hence, in different books, you'll find different room temperatures, but these are the only two values considered for room temperature. All right. So in your papers, if the room temperature value is considered as 20 or 25, both are considered correct for your papers. You will not be considered incorrect, even if you take the value 20 or 25. जी बेटा पूछें. Sir, are we hotter country or colder? Bit a hotter country. In Pakistan, the average temperature is higher. ठीक? And for most time of year, at least if not the whole country, your city is considered to be the topmost 5 cities, hot cities of Pakistan. ठीक है? रहीमा खान का जो highest temperature होता है, peak temperature होता है, वो first 5 cities of Pakistan में आता है. तो unfortunately, you're living in one of the hottest cities of Pakistan. ठीक? So yeah, हम room temperature को 20 नहीं consider कर सकते हैं. इसको समझने का एक और बड़ा अच्छा तरीका बेटा. We have 12 months in a year, ठीक है? आप ये देख लें कि आपके पास उन 12 months में से कितने months temperature 20 से या 25 से नीचे रहेगा और कितने months ऊपर रहेगा. So जब आप ये calculation करेंगे, you will come to know for around 8 months the temperature is higher or equal to 25, and around for 4 months the temperature is less than or equal to 20. तो फिर हम 20 को कंसिडर नहीं कर सकते हैं बेटा, हमें 25 कंसिडर करना पड़ेगा. सो पाकिस्तानी ऑथर्स, पाकिस्तानी बुक्स जो होती हैं वो 25 कंसिडर करती हैं. These books are British books actually. ब्रिटिश के केस में हमारे पास टेम्परेचर होता है वो for 8 months around 20 और लेस होता है, and for 4 months it's more than 20. So उनके लिए रूम टेम्परेचर 20 होगा. ठीक. एंड इट डिपेंड्स फ्रॉम कंट्री टू कंट्री. मैंने आपको इजी रूल क्या बताया, अर्थ का जो इक्वेटर है उसके पास जो कंट्रीज हैं उनमें रूम टेम्परेचर 25 कंसिडर किया जाता है, और जो इक्वेटर से जितने दूर होते जाते हैं, ठीक है, उनके लिए वो फिर 25 की बजाय 20 कंसिडर किया जाता है. पाकिस्तान 25 वाली लिस्ट में आता है. वेल, ये कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है बेटा. अगर आपने 20 भी कंसिडर कर लिया या 25 कंसिडर कर लिया, आपके एग्जाम्स में कोई आपको गलत नहीं करेगा. नंबर 1. नंबर 2, फॉर एनी क्वेश्चन लाइक दिस, आपके लिए जो आपका एग्जामिनर होता है, IGCSE एग्जाम्स के एग्जाम्स जो होते हैं वो बड़े फेयर होते हैं. वो ये नहीं करते हैं कि ऐसी assumptions आपके ऊपर छोड़ दें ताकि आप तंग हो और डिफरेंट स्टूडेंट्स डिफरेंट तरह से आंसर करें. नहीं, वो क्या करेंगे कि वो इस 20 को या 25 को क्वेश्चन स्टेटमेंट का पार्ट बना देंगे. So the whole word is going to tempt it in the same way. That's why this 20 is written in the book. So whoever is going to read the book is going to take the temperature as 20. ठीक? So इसमें कंफ्यूज नहीं होना है. क्वेश्चन में ये लिखा हुआ आएगा, और अगर क्वेश्चन में ये लिखा हुआ आता है तो फिर तो कोई कंफ्यूजन ही नहीं है. उसने 20 कहा है, आप 20 कंसिडर करेंगे. उसने 25 कहा है, आप 25 कंसिडर करेंगे. I hope that's easy and clear. If you have a question, please ask. All right. So it's just a point which needed explaining. Well, we are not going to consider the temperature as 20 during the whole exercise we are about to do. So we can determine whether it is seen as a solid, liquid, or a gas. ये जो आप टेबल देख रहे हैं बुक में, उसमें वो आपको ये एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहा है कि किसी भी सब्सटेंस के लिए, and they have considered many different substances over here. So in this table, in this list, you would see a few of them are gases, a few of them are liquids, a few of them are solids. All three states of matter exist at different temperatures, but for them, the melting and boiling points are much different from one another.
the value can be low and in negatives, or the value can simply be 0 at one point, or the value can be a higher positive value. ठीक है, आपको हर तरह की value इस पूरे table के अंदर मिलती होगी. ठीक, but what are we supposed to do? हम इसको एक separate table में करने जा रहे हैं, और हम इसको सिर्फ इस purpose के लिए करने जा रहे हैं कि ये एग्जाम्स में क्वेश्चन किस तरह से पूछा जाता है. So what I'm going to do is that I'm going to stop sharing your book, and I'm going to start sharing the Word document I'm about to make for you, and then by the end of the class I'll also send the Word document to you. Okay, just give me a moment. So what we are going to do is that I'm going to start sharing the screen like this, and what I'm going to do is that I'm going to put this book on one side. We're going to open a Word document, and I'm going to put that Word document on the other side. All right. So not just that, I'm going to increase the font size so the table is clear to you, right? So I think now both the tables are readable, right? Yes, Are sir. both tables readable? Good, good. Then let's get started. A table over here actually consists of every piece of information that you need. But in exams, usually one piece of information is missing, and you need to find that out. You need to determine that. Which piece of information is missing? That is the physical state at a specific temperature. Not just room temperature, we're going to practice it for a specific temperature. So what I'm about to do is, in this Word document, I'm going to define a certain steps, certain rules, how to find that, and we will be solving this physical state uh, by when the substance is given, the temperature at which this physical state is to be found is given as a part of question, melting point and boiling point is given as a part of question. मैं repeat कर देता हूँ, उल्टू में बता देता हूँ. Substance question में बताया होगा, टेम्परेचर जिसके ऊपर उसकी फिजिकल स्टेट फाइंड करनी है वो भी क्वेश्चन में बताई होगी, मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट भी क्वेश्चंस में बताए होंगे. क्वेश्चन में जो पूछा गया होगा वो फिजिकल स्टेट होगी. ठीक है, आपने फिजिकल स्टेट बतानी होगी. ये तो पूरे का पूरा टेबल बनाया हुआ है. आईजीसीएसई में क्वेश्चन ऐसे नहीं आते. आईजीसीएसई में गैस लिक्विड सॉलिड नहीं होता, आपको बताना है कि वो गैस है या लिक्विड है या सॉलिड है. और सब्सटेंस भी इस तरह से नोन नहीं होता, वो कोई भी अननोन सब्सटेंस ले सकते हैं. फॉर एग्जाम्पल आप मैथ्स में अब तक बहुत मरतबा ये व्यू कर चुके होंगे कि हम किसी अननोन चीज को एक्स कंसिडर कर लेते हैं, वाई कंसिडर कर लेते हैं, जेड कंसिडर कर लेते हैं. जरूरी नहीं है वो कोई एलिमेंट या सब्सटेंस नेम ही हो, तो वो एक्स वाई जी रख के भी पूछ सकते हैं. इट कैन बी समथिंग दैट इज हाइपोथेटिकल, वो एग्जिस्ट नहीं करती. ठीक, तो आपको उस हिसाब से आंसर देना होगा. So first of all, what we are going to do over here is that we are stating rules to determine the physical state of matter when the melting point, sorry, and boiling point are given. Okay? So what we are about to do over here is that when a question in IGCSE tells you what's the melting point and what's the boiling point of a substance at a specific temperature, what would be the physical state? आपको ये find out करना है कि उस time उसकी physical state क्या होगी, वो solid होगा, वो gas होगा, या वो liquid होगा. So let's first go with the rules. The rules are physical state is gas when at the specific temperature the temperature value is greater than both melting point and boiling point. Okay. Right.
And just like that, physical state is liquid when at the specific temperature. अभी हो सकता है ये रूल्स आपको क्लियर ना हो, बट व्हेन वी आर गोइंग टू स्टार्ट एक्सरसाइजिंग इट ये आपको ज्यादा अच्छी तरह से क्लियर हो जाएंगे. ठीक. The boiling point is greater than temp value, which is greater than melting point. And number 3 and last, physical state is solid when at the specific temperature. The boiling point and melting point are actually both greater than temperature value. This temp is actually temperature. Okay? So that's about it. अब इन रूल्स को एक्चुअली एक्सप्लेन कर लेते हैं. जी Sir, we will be given the temperature value. जी आपको टेम्परेचर वैल्यू भी बताइए. You will be given everything, every column over here. For example, the substance, the temperature value, the melting point, and the boiling point. The only thing you need to determine is physical state. So all 4 of these things will be given as a part of the question, and you're supposed to find physical state. इसे भी प्रैक्टिस भी कर लेते हैं ताकि आपको समझ आ जाए. Even book के टेबल में भी ये चीजें given है. देखें बुक के टेबल में लेट्स सपोज आपको सब्सटेंस बताया हुआ ऑक्सीजन. हम पहले एक एग्जांपल कंसीडर कर रहे हैं. लेट मी स्टार्ट एनोटेटिंग इट. जस्ट अ सेकंड. आई डोंट नो बट ओके. Follow the spotlight. For example, the substance is oxygen. The physical state at room temperature, the temperature is actually given to be 20 degrees centigrade. The melting point and boiling point are both given, which are both in negative. The melting point is minus 219 degrees centigrade. The boiling point is minus 183 degrees centigrade. You know, the values in negative are always smaller than the smallest positive number, which is 0, right? So 20 degree centigrade से minus 219 भी छोटा है mathematically speaking, और 20 degree centigrade से minus 183 भी छोटा है. तो temperature value से जब दोनों छोटे होते हैं, melting point और boiling point, physical state क्या होती है? Gas, according to the rules. ठीक. So, hence this is a gas. अब लिक्विड के लिए हमने क्या रूल दिया है? लिक्विड के लिए बॉइलिंग पॉइंट की वैल्यू टेम्परेचर से बड़ी होती है, लेकिन मेल्टिंग पॉइंट की वैल्यू टेम्परेचर से छोटी होती है. अब हमारे पास बुक एग्जांपल देखें. बुक एग्जांपल में टेम्परेचर वैल्यू जो है वो 20 डिग्री, जो यहाँ टेम्प वैल्यू लिखा हुआ है वो ये 20 डिग्री बताया हुआ है. ठीक. अब गौर से देखें, वाटर को लिक्विड इसलिए लिखा हुआ है क्योंकि जो मेल्टिंग पॉइंट 0 है वो 20 से छोटा है, लेकिन 100 जो है वो 20 से बड़ा है. ठीक है. लोग, मेल्टिंग पॉइंट की वैल्यू 20 से बड़ी है, सॉरी बॉइलिंग पॉइंट की वैल्यू 20 से बड़ी है, melting point की value 20 से छोटी है. Hence, according to the rules, the physical state is liquid. So water के सामने liquid लिखा हुआ है. ठीक है. लोग, हमारे पास एक और एग्जांपल भी है. ethanol और alcohol that we were discussing about yesterday. उसकी भी boiling point value 78 है, which is greater than 20, और उसकी melting point value 117 है. ये 78, 117 ये आपको याद नहीं करने, ये क्वेश्चन की स्टेटमेंट में लिखे होंगे. ठीक है. सो इस टेबल में हमें कुछ भी मेमोराइज नहीं करना होता. सही. ये टेबल सिर्फ और सिर्फ अंडरस्टैंडिंग के लिए. That's why I'm making a different table over here. सही. So minus 117 20 से छोटा है, 78 20 से बड़ा है. So ethanol 20 डिग्री सेंटीग्रेड पर लिक्विड हो गया. अब आते हैं किसी सॉलिड की एग्जांपल पे. फॉर एग्जांपल हम कॉमन सॉल्ट, वो जो सॉल्ट हम डेली खाने में इस्तेमाल करते हैं, इसे टेबल सॉल्ट भी कहते हैं. ये हमारे खाने की टेबल पे भी पड़ा होता है. सोडियम क्लोराइड इज द एक्चुअल नेम. ठीक है. उसका मेल्टिंग पॉइंट 801 है, which is a far greater number than 20. उसका boiling point 1465 है, which is even a bigger number than 801 and definitely bigger than 20. Hence, the physical state at 20 degrees centigrade would be solid. Clear?
तीनों एग्जांपल्स सबको समझ आती हैं? Yes, sir. Yes, sir. किसी को नहीं समझ आती हैं तो पूछ लें। सर मुझे वो गैस वाली नहीं समझ आई सर। कोई प्रॉब्लम नहीं है। और कोई स्टूडेंट? Yes, sir. The ethanol one. अच्छा ठीक है, हम ऐसा करते हैं कि सर हम लिक्विड वाली सर। लिक्विड वाली liquid नहीं समझ आई, कोई प्रॉब्लम नहीं है बेटा। हम ऐसा करते हैं कि हम इसे अच्छी तरह से प्रैक्टिस करते हैं, ठीक है। और बुक तो बहुत इजी दी हुई है, आईजीसीएसई के पेपर क्वेश्चंस इतने इजी नहीं होते, मतलब बुक में सारी एग्जांपल्स 20 डिग्री सेंटीग्रेड पे कैलकुलेट की हुई हैं। हम ऐसा नहीं करेंगे। सो फर्स्ट हम सॉलिड, लिक्विड और गैस को एक्सप्लेन करते हैं कुछ एग्जांपल्स में, और उसके बाद फिर हम इस टेम्परेचर को भी चेंज करेंगे और फिर हम डिफरेंट वैल्यूज फाइंड आउट करेंगे, ठीक है। सो स्टार्ट करते हैं। हम पहले खुद से वैल्यूज कंसिडर कर लेते हैं, ठीक है। लेट्स सपोज हम किसी सब्सटेंस की बात कर रहे हैं जो कि ए है, हमें नहीं पता सब्सटेंस क्या है। मैं इधर कोई नाम इसलिए नहीं लिख रहा ताकि आप गेस ना करें। फॉर एग्जांपल स्टूडेंट्स को पहले से पता था नाइट्रोजन गैस है, तो मैं अगर नाइट्रोजन का नाम लिखूंगा तो आप फौरन से कह देंगे गैस है। सो मैं कोई अननोन से सब्सटेंसेस कंसिडर कर रहा हूँ, और वन बाय वन हम ऐसा करते हैं, क्वेश्चन करते हैं। हमारे पास 20 स्टूडेंट्स हैं, हम कोशिश करते हैं कि हम जल्दी जल्दी क्वेश्चनिंग करके इसे पूरा करें। लेट्स सपोज हमारे पास इसका मेल्टिंग पॉइंट जो है वो है -100, और हमारे पास इसका बॉइलिंग पॉइंट जो है वो है -20, ठीक है। सो हमारे पास एट 20 डिग्री सेंटीग्रेड इसकी फिजिकल स्टेट क्या होगी? लेट्स स्टार्ट Sir, आस्किंग gas. फ्रॉम ओके हफ्सा, गुड गेस गैस। लेकिन हफ्सा मैं नाम लूंगा फिर वो बोलेंगे, ठीक है। तो हफ्सा ने तो अपना आंसर दे दिया, हम नेक्स्ट स्टूडेंट से स्टार्ट करते हैं। गुड वर्क हफ्सा। ऑफ कोर्स इट इज गोइंग टू बी अ गैस। व्हाई? बिकॉज़ -100 एंड -20 आर बोथ स्मॉलर देन आवर टेंपरेचर वैल्यू 20, ठीक है। लेट्स सपोज समथिंग इज बी, ठीक है। What would be the physical state if the melting point is -200 while the boiling point is -100? Abu Bakr, this question is for you. Next question will be from Adan. Be ready. Sir, hello. Ji beta, what's your answer, Abu Bakr? Sir, gas. Why, Abu Bakr? Because the values are smaller than 20 degrees Celsius. Easy enough, right? So very good. Adan, let's start with you. The temperature again is 20 degree, but the melting point this time is 100 degree, while the boiling point this time is 200 degree centigrade. What would be the physical state? Liquid. Think again. Liquid is not the correct answer. Think again. Another guess. And remember, the rules are written over here. Melting point and boiling point are both greater than the given temperature. 100 भी बड़ा होता है 20 से, 200 भी बड़ा होता है. Very good, solid. ठीक? And the reason is because the melting point and the boiling point are both bigger than the given or the specific temperature value, right? So next question, Afnan. Thank you, Adan. Afnan, can you hear me? Yes, sir. Afnan, how about this one? What would be the physical state? And the rules are written in front of you. आराम से rules पढ़ें, दोबारा से इसे judge करें, फिर बताएं. मतलब answers are given over here. If you understand the point, you'll get to the right answer. If not, take a second turn. Try. Liquid. Liquid. Why, Afnan? Very good. The correct answer is liquid. Ji Afnan, what would be the reason? Sir, this is liquid. This is liquid, but why? What would be the reason? Afnan, this is a liquid because 18 is smaller than the number than 20, but 24 is a bigger number than 20. Melting point given temperature से छोटा है, लेकिन boiling point बड़ा है. According to rule number 2, that is liquid. ठीक? Now, Amna Sling solves E.
सर मेरा कनेक्शन प्रॉब्लम हो गया था सर. कोई प्रॉब्लम नहीं है बेटा, इट्स ओके. आमना सलीम, सॉल्व ई पार्ट. Yes, sir. ई पार्ट को सॉल्व करें आमना Excuse बेटा. me, sir. Please repeat. Okay. और इसके अलावा अरहम नईम, सॉल्व एफ पार्ट. Excuse me, sir. Can I solve the next part? Wait बेटा, I'll get back to you. ठीक है. जी आमना, you're taking too much time बेटा. हमारे पास क्लास में इतना वक्त नहीं है. अगर नहीं समझ आ रहा तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, बता दे नहीं आ रहा. Sir, Otherwise sir, guess कर ले. sir, Even if it's wrong, it's not a problem. sir, sorry. Okay, कोई मसला नहीं है बेटा. आमना Okay, sir. Liquid. Liquid by Amna. Very good, and that's correct. Okay, thanks. Arij, F part. Bilal, G part. Sir, it's an solid. It's a solid. Why Arij? Very good. Sir, because the melting point and the boiling point both are bigger than 20. Acha, good. G. After Arij, G part, Hassan. Then H part is for Halima. Can I do the I part? The G part is a solid because the melting point and boiling point both are higher than that temperature. Yes, very good. This time I changed the given temperature, but very good answer. ठीक है. जी इब्राहिम, आपसे I part कराते हैं. Halima, what's your answer? Liquid. Who's that? Solid. Acha. Actually, your first answer was correct. It's a liquid. Is that Halima or Umama? Your voices are too similar for me to differ. It was Halima. Acha, acha. Ji Halima, why it's a liquid? Melting point is smaller than the temperature. Muhammad Ibrahim, I is yours to solve. Ji, Sir, very good. Yes, yes. Correct work, Yes. Halima. Sir, And yes, why? Yes. Sir, Good work, Ibrahim. because 50 is lower than 100 and also and melting and boiling point are lower than 100. Yeah, that's the point. Good work. Finally, let's come to J. Fatma, it's your turn. Ji, reach beta. Puche. Sir, I have a question. Ji, sure. Sir, I wanted to ask, sir, if the melting point is bigger and the boiling point is smaller in case, then what do we have to write? Beta, aisa hota nahi hai. There is no example in the word in which melting point is bigger and boiling point is smaller. And I'll explain that when we are doing the kinetic theory or the kinetic model of matter, which is actually 4 to 5 pages after this one. Okay? You may keep the question. मैं अभी समझा तो नहीं पाऊंगा, उसके लिए कुछ चीजें बताना जरूरी है, लेकिन जैसे ही kinetic model of matter आएगा, do remind me, I'll definitely answer the question each. ठीक है? Keep the question. इसे भूलना नहीं है. आपने kinetic model of matter में इस question को दोबारा पूछना है. ठीक है? जी.
Who did I ask you to solve J? Fatma, is it? Yes, sir. Haji Fatma, what would be the answer? So it's gas. Why Fatma? Why is it a So gas and that's correct? because melting point and boiling point are lower than the temperature. Okay, very good, very good. ठीक है? Okay, मेरे पास chat में question है. Just a second. हाँ जी, अबू बकर ने क्वेश्चन पूछा हुआ है. अबू बकर, फर्स्ट थिंग, अबू बकर से नहीं बल्कि पूरी क्लास से, अगर आप चैट में कोई क्वेश्चन करेंगे तो आप प्राइवेटली नहीं करेंगे, उसके ऊपर क्लिक कर लेंगे एवरीवन के लिए. लेकिन जो बच्चे फोन यूज कर रहे होते हैं, आई डोंट नो उनके पास ये ऑप्शन होती है नहीं होती. कुछ पुराने फोन्स में ये प्राइवेटली और एवरीवन की सेटिंग की ऑप्शन नहीं आती. ठीक है, नहीं आती तो ओके है, अगर आती है तो आप क्वेश्चन सारों के सामने करेंगे ताकि सबका फायदा हो. लेट मी एक्सप्लेन द क्वेश्चन. इससे पहले क्लास खत्म हो, हमारे पास हार्डली 2 मिनट्स रहते हैं, मैं इसे क्विकली गो थ्रू करूंगा. अबू बकर का क्वेश्चन ये था कि अगर मेल्टिंग पॉइंट या बॉइलिंग पॉइंट में से कोई वैल्यू एग्जैक्टली 20 है और जिस टेम्परेचर पे हम उसे फाइंड आउट कर रहे हैं वो भी 20 है, तो फिर क्या होगा. ठीक है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, अ जेन्युइन वन. सही. तो ऐसे क्वेश्चन के लिए जिसमें जो भी वैल्यू, लेट्स सपोज अगर मेल्टिंग पॉइंट 20 है, अभी वैसे तो मैंने ये पढ़ाया नहीं है, इसके बाद कल के दिन के लिए था, मतलब नेक्स्ट वर्किंग डे के लिए, लेकिन मैं अभी बता रहा हूँ. अगर मेल्टिंग पॉइंट 20 है तो वो जो दोनों स्टेट्स मेल्टिंग पॉइंट में चेंज होती हैं, मेल्टिंग पॉइंट पे कौन सी दो स्टेट्स चेंज होती हैं? सॉलिड या तो लिक्विड में कन्वर्ट हो रहा होता है, और अगर उसी पॉइंट को हम फ्रीजिंग पॉइंट भी कहते हैं जब लिक्विड सॉलिड में कन्वर्ट हो रहा होता है. तो ऐसे पॉइंट पर दोनों स्टेट्स को एग्जिस्ट करती हैं, दोनों साथ साथ होती हैं. मतलब आधा मैटर सॉलिड में होगा, आधा मैटर लिक्विड में होगा, या कुछ हिस्सा सॉलिड में होगा, कुछ हिस्सा लिक्विड में होगा. बोथ स्टेट्स Then विल how is it कोएग्जिस्ट. possible? ठीक है जी बेटा, इट्स पॉसिबल, इट्स वेरी मच पॉसिबल. कैसे? अरीज, मैं आपको एग्जांपल देना चाहूंगा आपकी अपनी आइसक्रीम की. आप मार्केट से जाके आइसक्रीम खरीदते हैं, वो आइसक्रीम एक डीप फ्रीजर में स्टोर्ड होती है, आप उसे निकालते हैं, खोलते हैं, खाना शुरू करते हैं. जैसे आप खाना शुरू करते हैं उस बेचारी आइसक्रीम का टेम्परेचर बदल जाता है. ऑफ कोर्स आप डीप फ्रीजर के अंदर बैठ के नहीं खा सकते, सो यू हैव टू कम अप. जैसे ही उसका टेम्परेचर बदलता है, आपकी कुछ आइसक्रीम जो होती है वो अभी तक अपने सॉलिड पार्ट में होती है, और कुछ आइसक्रीम मेल्ट भी हो जाती है. आपने देखा है ना? So they are coexisting. Yes, sir. Actually, the solid and the liquid form are both coexisting at that temperature. Melting point में solid और liquid coexist करेगा, boiling में liquid और gas coexist करेगा. We have hardly 10 seconds left. If you have any questions, आप WhatsApp पे भी पूछ सकते हैं या next class में पूछ सकते हैं. Let's end this class over here. और आपको ये document मिल जाएगा WhatsApp पे. ठीक है class? अल्लाह हाफिज. Allah Hafiz, Allah sir. Hafiz, sir. Allah Hafiz, sir. Officer.